Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 25th of February and these are the list of the topic. The first is Cabinet approve PLI plan for pharma and hardware sectors. IT and hardware. The second is US to rejoin UNHRC. Third, winter pollution on rise. The second last is Ghana receive vaccines under the COVAX initiative. And the last is federalism and the Indian human capital. So this is an editorial from the Hindu. Apart from all the discussion of the news, we'll be having some MCQs question at the end of this session so that this can help you in the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started with the first news. The title of the news is Cabinet approved PLI plans for the pharma and IT hardwares. So this is important for your general studies paper 3 and the Indian economies and issue related to planning. और अगर PLI की बात करें, so this is important for only for the prelims examination, right? So production link initiatives के बारे में आप देख लें because government is more focusing on this part after the COVID-19 and आत्मनिर्भर भारत जो योजना है गवर्नमेंट की उसमें PLI को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया. So the Union Cabinet has recently approved production-linked incentive scheme for the pharmaceutical sectors and the IT hardware sectors. और इन दोनों के लिए जो corpus allocate की गई है, so for pharmaceutical sector this is 15,000 crore rupees, and for IT and hardware sector the entire amount sums up to 7,350 crore rupees. So this is the dedicated amount. आपको amount याद रखने की जरूरत नहीं है, but आप एक average याद रख लेना किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, right? Now, advantages of the PLI plan for the pharmaceutical, how this PLI plan is going to help the pharmaceuticals industry. तो यहाँ पे PLI scheme for pharmaceutical is for 9 years. So the duration has already been provided. This would be continuing for 2029 and it would benefit the domestic manufacturing. जितने भी domestic manufacturing है इंडिया में, खास करके आपने देखा जिस तरह से vaccines बन रही है, we have 3 major leaders. 2 of them are already manufacturing. पहला है Serum Institute of India. Second is Bharat Biotech. And third, very soon we would be having vaccines from Dr. Reddy as well. They have submitted their trials result to SETSCO और Dr. Reddy भी बहुत ही जल्द इसमें आ जाएगी, right? So these are the 3 important manufacturers. तो domestic manufacturing को और कैसे आगे बढ़ाया जा सके. So this is linked under the PLI plans. Now it would create employment and expected to contribute to the availability of wide range of affordable medicines to the consumers. India already had one of the cheapest, talking about the drugs. तो यहाँ पे जो drugs है वो काफ़ी सस्ती है compared to Western countries because of the possibilities of generating a lots of drugs, right? And India has been producing a lot of drugs. भारत बायोटेक की अगर बात करें, these are one of the leaders. Serum Institute of India is also the leaders. तो यहाँ पे प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है. इसको और अफोर्डेबल बनाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स में हेल्प मिलेगी. Now the scheme is expected to bring the investment of 15,000 crore rupees in the pharmaceutical sector. So investment अगर ज़्यादा होगी, FDI आएगी तो कहीं ना कहीं कंपनीज को प्रॉफिट होगा. साथ के साथ जो कंज्यूमर्स है जो प्राइस पे करते हैं they would be also benefited. तो PLI प्लान जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी हेल्प करेगी. Now the scheme is expected to promote the productions of high value products in the country and increase the value of additional in the export as well. So right, so it would also help कि हम बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं जो अभी इंडिया एक्सपोर्ट करती है. खास करके वैक्सीन्स की अगर बात करें तो नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट के थ्रू हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन्स भी दिया है. बट एडिशनली अपार्ट फ्रॉम द कोविड-19 वैक्सीन्स, एनी अदर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वुड अगेन बी ऑन एज, जहाँ पे इंडिया अपने ड्रग्स को, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकता है इन द एक्सपोर्ट सेक्टर्स. Now advantages of the PLI plans for the IT and hardware. यहाँ पे IT और हार्डवेयर से किस तरह से मदद मिलेगी. So this would be again improving the laptops, tablets, all in one PC सर्वर्स जितने भी हैं, इन सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है IT और हार्डवेयर में. So the scheme is giving an incentives. This will be given an net incremental sale of the good manufacturer in India for 4 years. So इसके लिए जो ड्यूरेशन है that is for 4 year और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है for that is complete 9 years. So it will benefit 5 major global player and 10 domestic champions in the IT hardware.
अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, दिस वुड प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत, एंड दिस इज अ ह्यूज, वी आर मोरली डिपेंडेंट ऑन चाइना. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट होती है. सो जो इम्पोर्ट है उसको कम करने के लिए, और इंडिया में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स के थ्रू या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक the IT hardware sector more self-reliant. Now, definitely, it will enhance the development of electronic ecosystem in the country. And talking about the scheme, this is going to help almost 1,80,000 jobs, direct or indirect, in the past 4 years. जो टोटल जो 4 साल की ड्यूरेशन रखी गई है इसके लिए, सो इन दिस टोटल ड्यूरेशन ऑफ 4 years there would be 1,80,000 jobs that is going to be generated from the IT and hardware sectors. नाउ क्रिएशन ऑफ डायरेक्ट जॉब्स, इट हैज़ बीन सेड कि ये दोनों सेक्टर मिलके बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स. सो द ग्रोथ इन दिस सेक्टर्स इज एक्सपेक्टेड टू एड ऑलमोस्ट 20,000 डायरेक्ट जॉब एंड 80,000 इनडायरेक्ट जॉब्स फॉर बोथ स्किल्ड and unskilled persons. Now, the scheme aims to create a global champions from India that have potential to grow in size, right? खास करके वैसे एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं. And that would include the cutting edge technology and thereby penetrating the global value chains, right? So global value chain में India already has been said कि जो स्टैंडर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो स्टैंडर्ड है हमारी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू या जो भी चीज़ें अब बन रही है उसकी स्टैंडर्ड ग्लोबली होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन compete at the global level, right? So this is all about the creation of direct jobs. Now, the other news, US to rejoin UNHRC. The news has been reported in Hindu and it's spotted for General Studies Paper 2 and the important international institutions. और UNHRC के बारे में अगर बात करें तो ये आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है. So the United States Secretary of State, जो US का Secretary of State है, he said that the US will seek to re-election to the United Nations Human Rights Council, UNHRC है. So this is the latest series of move that is coming from the John Biden administration. जो जॉय बिडेन नए प्रेसिडेंट है यूएन के, उनके तरफ से जितनी भी चीज़ें रिवर्स पैटर्न की गई थी पुराने प्रेसिडेंट, दैट इज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वॉट एवर डिसीजन ही हैज टेकन, ही इज ट्राइंग टू रिकवर दैट, उसको रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है, उस डिसीजन को रिवर्स करने का डिसाइड किया जा रहा है ताकि जो मल्टीलैटरल फोरम है उस पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन सके यूएस की और यूएस पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके. एंड आई पर्सनली फील कि जो डिसीजन ली गई है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दैट इज कमेंडेबल एंड डेफिनेटली दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट सो दैट दे कैन सेट अ बेंचमार्क कि भाई जो ग्लोबल लेवल पे जहाँ पे आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है, यू कैन नॉट स्केप आउट only because you are the developed economy or you are the superpower, right? So you have to be considering the fact that you are growing in a sustainable manner, equitable manner and shareable manners, right? So इस तरह के points आप examination में लिख सकते हैं. Now the US was placing human right at the center of its foreign policy, thereby seeking to rejoin the council. Now कुछ important challenges की बात करें, racial justice की बात की गई है. सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना था, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही सेड दैट द चैलेंजेस इज विथ रिगार्ड्स टू द फाइट ऑफ रेशियल जस्टिस दैट इज कमिंग विथ रिगार्ड टू द ग्लोबल ह्यूमन राइट एजेंडा. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री की एग्जाम्पल्स दी गई है, जैसे श्रीलंका की अगर बात करें तो मैं आपको आगे बताऊंगा श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम है. नाउ ही सेड दैट नो मोरल इक्विवेलेंस बिटवीन द एक्शंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ऑथोरिटेरियन रिजीम. और काउंसिल ने रेजोल्यूशंस की बात की थी दैट इंक्लूड द सेशंस ऑन श्रीलंका. सो यहाँ पे श्रीलंका में बहुत सारे वॉर क्राइम्स भी हुए हैं. यूके ने और अदर कंट्रीज ने सर्कुलेट किया था एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वेयर दे हैव आस्क्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर द वॉर क्राइम इन श्रीलंका विच टुक प्लेस 26 ईयर अगो ड्यूरिंग द सिविल वार्स, राइट? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए, ह्यूमन राइट की जो क्लाउजेज हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ग्लोबली, दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कंट्री. Now the US encourage कि जो council है that would support the resolutions in addressing some issues and concern in the world, right? So this would be very important. Country like United States coming and taking a proactive role in terms of advancement of the multilateral forum, and at the same time they would be doing it in the favor of the humanity and the mankind. Now coming to the other part, this is a news talking about winter pollutions on the rise. So
इट हैज़ बीन सीन लाइक प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन की गई है कि जो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस है और वो कैसे इंक्रीज हुई है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एज वेल. और विंटर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन इन जनरल is again very significant for the prelims examination. They can ask you anything with regards to PM 2.5, PM 10 जो है, ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे कई बार यूपीएससी ने ऑलरेडी मल्टी स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं. So as per the latest study, ये study conduct की गई थी Center for Science and Environment (CSE). It's one of the notable non-governmental organization है, NGO है ये. So they have find that the level of PM, that is PM 2.5, has worsened in 43 cities out of 99 cities. तो 99 cities में 43 performance जो cities की performance है वो काफ़ी poor रही है, right? So these are degraded और it is poor और it is negative. Now बात करें अगर PM 2.5 की, this is most threatening particulate matter because it is not easily filter it out. तो यहाँ पे मास्क से भी कई बार 2.5 फिल्टर नहीं हो पाती है. Now, the Center for Science and Environment is a non-governmental and research organization, and these give some of the most authentic reports that are compiled by the organization itself. Now, improvement के बारे में बताई गई है कि किस तरह से जब लॉकडाउन इम्पोज थी पूरे कंट्री में, so there were several cities that have reported कि जो pollution की लेवल है वो इम्प्रूव हुई है. इवन सारे जगह पे आप एक्वेटिक की बात कर ले, टेरेस्ट्रियल की बात करें, एयर क्वालिटी की बात करें, everything has improved, right? Because a country was going with a lockdown none less than 4 to 5 months. That was a complete stringent and strict lockdown that was imposed in pan India. Now, after the unlocking process, the country has a pollution level that has clawed back to the pre-COVID level. But जिस तरह से unlocking की process start हुई है, now the entire population level, जिस तरह से pollution जिस तरह से बढ़ रही है, that has come to the pre-COVID levels. Now, worst performance cities की अगर बात करें अगर CSE के मुताबिक, so the cities that have worst performance that has spiked in 2020 and 2019 that include Gurugram, this is Gurgaon or better known as Gurugram, the name has been changed. So Lucknow, Jaipur, Visakhapatnam, Agra, Navi Mumbai and Jodhpur. So these are the one of the most worst performance state in terms of particulate matter 2.5. And Kolkata is the only mega city in this group. So Calcutta has also been included, but this is a metropolitan city that is there in this part. Now this is a graph which you can find in the Hindu as well. It talks about कि किस तरह से particulate matter 2.5 की जो level है comparing to 2021 2019-20 कहाँ पे आगे बढ़ी है. तो फतेहाबाद की एक नाम की जगह है, फतेहाबाद in हरियाणा. So this has seen 228% increase in the particulate matter. So you can see Sagar is again in MP, Agra, Sonipat, Kalyan in Mumbai. So these are the graph, and Kota has also seen rise from 29%, right? So आप इस chronology में देख सकते हैं. A question can be asked. So what you need to do, आप ये जो top 5 है और जो top lowest हैं इनको देख लें because this can help you. Now finding of the studies, what more the study has found. So winter के बात पे बात की गई है. Winter cool and calm weather traps and spike the daily pollutions, particularly in the North India located in the Indo-Gangetic plain. जो भी Indo-Gangetic plains के आसपास की जो एरियाज हैं उनमें ड्यूरिंग विंटर बहुत सारे पर्टिकुलर मैटर को ट्रैप करके रख लिया जाता है. वेदर कंडीशन ऐसी हो जाती है. नाउ दिस ईयर्स द एवरेज लेवल ऑफ PM 2.5 ड्यूरिंग द समर एंड द मानसून वाज कंसिडरेबली लोअर देन द प्रीवियस ईयर, राइट. तो पर्टिकुलर मैटर में किस तरह से कोल, फॉग और ये सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, इसके इम्प्लीकेशंस आप पढ़ सकते हैं. एनवायरनमेंट की NCERT की बुक है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक आप देख ले, वहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पढ़ ले, बिकॉज UPSC इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज पार्ट, राइट. Now the study has also emphasized on the smaller upcoming of the cities that were emerged due to the pollution hotspots. So these were some of the important findings that has come by the CSE. Now the other news from the Indian Express, Ghana received vaccines under the COVAX initiative. So COVAX initiative से इस बार सवाल पक्के आने वाले हैं. Make sure you are thorough with this point. We already had a discussion. क्या है COVAX मैं आपको आगे भी बताऊंगा. And talking about the General Studies paper 2 मेंस की अगर बात करें, so bilateral regional grouping agreements में important है. So Ghana has become the first country in the world to receive the vaccine that would be
acquired through the United Nation backed COVAX initiatives. और कोवैक्स इनिशिएटिव एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम है जहां पे ये इंश्योर किया जाएगा कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उनको एक फेयर एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन दिया जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवैक्स, राइट. और जो कोवैक्स है दिस इज बीइंग लेड बाय द यूनाइटेड नेशन WHO. तो WHO के गाइडलाइन में, और गैवी एज एन NGO बेसिकली एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पुरानी हिस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस. वैक्सीनेशन ग्रुप है ये सारे मिलके कोलेट करेंगे. एंड द कोalition फॉर द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और सेपी, these three are the main organization. They are leading the COVAX initiative. So the first is WHO, second is Gavi, and third is CEPI. Now, the delivery of 6 lakh doses of the AstraZeneca vaccine that is being developed by Serum Institute of India, and this is being developed in Pune. तो इंडिया में इसको डेवलप की गई है और ये वापस घाना भेजी गई है. And the vaccine was being delivered by the UNICEF, right? So UNICEF is monitoring it, and Ghana is among the 92 countries that have signed into the COVAX program. Now, Ghana vaccination program began on March 2nd. And it would be conducted in the phase manner. Priority group जो है वहाँ के जो front clear health line workers हैं, adult of age 60 over the people underlying the health condition, frontline executive, legislature, judiciary, and the other related staff would be among the priority group. They would be first vaccinated in Ghana. Ghana has set they have set their own priorities and the vaccination process to be coming on the first and foremost basis. So this is all about the Ghana that would be starting the vaccination process from March 2nd. Now coming to the last news, this is basically an editorial, talks about the federalism and India's human capital. So this is again a good analysis, a very good analysis, which talks about the government policies and the need of decentralization in the government policies and how this is going to help in augmenting the human capital in India. So a very good analysis, and I expect a question can be there in the mains examination. There's no question from the prelims. Prelims के लिए यहाँ पे कोई question expect नहीं कर सकते, but for sure a question can be asked in the mains examination. So to achieve the target of sustainable growth, investment, human capital through intervention, ये ज़रूरी है कि nutrition, health और education तीन important factor बताए गए हैं. First is nutrition, second is health, and third is education. These need to be very crucial if you want to achieve a sustainable development in a country. तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसमें तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है. वी आर ऑन 116. सो जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, वहाँ पे वी आर लैकिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट हेल्थ, फॉर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, दैट इज अ लेटेस्ट वन फॉर 1920, इट शोज कि जो मैल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं that is stagnant or declining in most of the state, right? Despite the fact that India has some of the largest producer, we are the world's largest producer of pulses, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो FCI की गोडाउन में सड़ रही हैं, बट उसके बावजूद इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन की रेट है वो हाई है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट देखी नहीं गई है. Why government is not taking this point seriously? ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कंट्री के लिए. बट the government is or doing something that they have diverted their motor, they have diverted their priorities. So definitely these things would be taken. Let's see when the government is considering the fact that national health is again one of the most important and significant part of the overall development of the country. Now national achievement survey की अगर बात करें और annual state of education report की बात करें तो that is also poor. तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों एस्पेक्ट्स बताए, न्यूट्रिशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के और एजुकेशन में इंडिया के जो भी परफॉर्मेंस है तीनों में खराब है, राइट. सो वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एनी एस्पेक्ट्स, नीदर इन न्यूट्रिशन नॉर हेल्थ और इन द एजुकेशंस. नाउ गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, दे आर रनिंग विद इनिशिएटिव, बट अगेन द रिजल्ट इज नॉट दैट ग्रेट. So the government initiative has been launched to address these problems. So the first is National Health Policy 2017 that's highlight the need and intervention to overcome the malnutrition, but still we are lacking on that part. और अगर नीति आयोग की जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको पोषण अभियान भी बोला गया था, उसको लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से. एंड दिस इज एन अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बट बजट में भी इसको रखा गया है पोषण 2.0 और समग्र शिक्षा अभियान दैट हैज बीन अगेन द सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम सिंस 2018. So let's see how this gonna give results. But at time being, considering the fact, still जो results होने चाहिए वो नहीं है.
However, India spends just 4% of the GDP on public expenditure on the human capital and 1% और 3% अराउंड हेल्थ एंड एजुकेशन. तो हेल्थ, हमारी जो हेल्थ में जो खर्च है वो 1% है, एजुकेशन में 3%. एजुकेशन में इस वजह से ज़्यादा है बिकॉज बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट खर्च देती है रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा है. बट डेफिनेटली आफ्टर कोविड-19 दिस वुड हैव इंक्रीज टू 2.5%. हेल्थ में भी इंक्रीज की गई है. बट एक्सपर्ट का जो मानना था कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर में हमें 4% तक जीडीपी को खर्च करने की ज़रूरत है. बट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस डिसीजन और ये 2.5 में हेल्थ और वेलनेस दोनों इंक्लूडेड है. राइट नाउ इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें, सो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस सजेस्ट कि जो इंटरवेंशन है दैट आर नॉट लीडिंग टू बेटर आउटकम. इंडिया को ज़रूरी है कि वो डिसेंट्रलाइज करे चीज़ों को. और ग्लोबली ये देखा गया है कि अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एक्सपेंडिचर्स है रेवेन्यू टुवर्ड्स सर्व नेशन has been taken place in the many great countries or UK, even other countries have taken that, and the trend is backed by the studies demonstrating the positive correlation between the decentralized and human capital. तो ये एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है इंडिया को और इसी एफर्ट्स में इंडिया ने कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को किया भी है. सो इन लाइट ऑफ दैट, सो द रिसेंट ईयर इंडिया हैज़ टेकन सम स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन ने पहली बार जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है उसको चेंज किया था, 32% से 42% किया था. बट अभी की जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसने 1% कम कर दिया. दे हैव सेट इट टू 41%. 1% इस वजह से कम की गई है क्योंकि जो नई हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली डिवोल्यूशन जाएगा. राइट नाउ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, ऑलरेडी आपको पता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज सेंटर एंड द स्टेट, और इंडिया में 7th शेड्यूल में 3 लिस्टेड की गई हैं. वो जो 3 लिस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट काम करती है. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, अदर इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. सो द वर्क प्रायोरिटीज and the work are being segregated on the state list, union list and concurrent list. So to address the vertical imbalances, constitution provide for the physical transfer of the tax, devolution and grant and aid. Now several imbalances की बात की गई है. जिस तरह से 73rd और 74 अमेंडमेंट हुए थे, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में. बट अगेन 11th और 12th शेड्यूल रिस्पेक्टिवली उसके फंक्शंस को बताती है. Now, these include education, health, sanitation, social welfare of the panchayat, public health, and social economic development of the municipalities. डेफिनेटली यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, इनके पार्टिसिपेशंस. एट द सेम टाइम अगर फाइनेंशियली बात करें तो इनको खास करके अगर जब तक स्टेट फाइनेंस कमीशन अगर नहीं बनती है, बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होती है दैट इज़ डेडिकेटली लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. तो वो जिम्मेवारी कानून में, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीइंग एनविसाज्ड दैट दिस thing has to be taken care by the State Finance Commission. However, the constitutions let the state determine how they have empowered, resulting in the vast disparity by playing the third tier of the government. So definitely government need to take care of the devolution of the taxes taking place between the panchayat and the municipalities, and at the same time the devolution has to be sustainable so that equitable growth is going to promote in the panchayat and the municipalities areas. Now, towards the solution, the center need to rethink the nature of actions, and it should play enabling role in instances of encouraging the knowledge sharing between the states. और अगर कुछ बड़े states की बात करें, so human capital intervention is a need of the hour, जहाँ पे they need adequate physical resources. और स्टेट्स को ये ज़रूरत है कि वो अपने प्रायोरिटी को रैशनलाइज करे, फोकस करे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में, और पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी नीड टू बी विजिटेड विद देयर फंक्शन इन लिस्टेड दैट इज देयर इन द 11th एंड 12th शेड्यूल. तो उनकी जो जिम्मेवारी है वो अपना पूरा करे, स्टेट अपनी जिम्मेवारी को पूरा करे, और सेंटर जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है वो पूरी तरह से दे, क्योंकि अभी जो जीएसटी के सेस हैं वो भी बहुत सारे स्टेट्स को नहीं मिली हैं. So this is the responsibility of the central government that they should immediately give the cess that is required to the state so that they can proceed with their government programs and welfare programs. Now coming to the MCQs of the day, as you know that we are asking questions only from the current affairs to help you understand and cover the current affair part that can help you in the upcoming prelims examination. So the first question, consider the following statement about the olive ridge turtle. You can consider this as an environment question also. So these are the carnivorous
carnivorous turtle. The Odisha Garimatha Marine Sanctuary is known as the world largest rookery or colony of breeding animals on the sea turtles. So what you have to do, you have to just choose the options A, B, C or D and write your answer in the comment section down below. Now the second question, consider the statement about the National Urban Digital Mission, NUDM. So this is under the Ministry of Communication. This has been launched by the Ministry of Communication, and it will create a shared digital infrastructure for urban India, working across three pillars of the people process platform to provide the holistic support of the cities and town. So which among the following statement is correct? A, B, C or D? So you can make an intelligence guessing and you can reach out to the answers. And whatever answer you feel is correct, you can write that in the comment section down below. So do participate, write your answer there. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much.